प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको करना कैसे था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. All right. Question number 1 to 6. Question number 1 to 6. The following graphs show the production and the export figures for the Indian industry from 96-97 to 2000-2001. You may assume that the entire production is either consumed or exported. Okay, so what we are getting from here is that your entire production is made up of two parts, that either you are exporting it or you are consuming it domestically. Okay, so production is equal to exports plus consumption. Therefore, if any question is about consumption, तो आपको करना पड़ेगा production minus the exports. Okay. So in the first bar graph, you're getting the production, which is given in millions. And in the second bar graph, it is exports, again given in millions. Okay. So now question number 1 is saying, in which year was the ratio of production to exports the minimum? All right. So now it's a comparison based question. Okay, you have to compare the ratio of production to exports. And then you have to say कि इनमें से lowest कौन सा है, but ध्यान रखिएगा it's a comparison based question. Okay. So if you go by the options, तो पहला option है आपका 96-97. So your production is 67275 upon 6658. Okay. Your second option is 9899, 113285 upon में 10565. Your third option is 119256 upon 12056. And then lastly, you have 125250 upon 13900. Okay. So now, because it's a comparison based question, so let us first try to use approximations. Maybe approximations के through ही आपको आंसर मिल जाए, exact calculation करने की जरूरत ना पड़े. Okay. अब थोड़ा सा टेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए. हम शुरू से ये बात करते हुए आ रहे हैं कि अप्रोक्सीमेशंस में टेबल्स और रेशियो सॉरी रेसिप्रोकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके. कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस जहां पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स अप्रोक्सीमेशन के थ्रू काम कर रहे होते हो, एनीवेज टेबल्स और रेसिप्रोकल्स आपके बहुत काम होते हैं. अब यहाँ देखिए एक बार, सारे लोग यस या नो करते जाइएगा अगर ना समझ आए तो. इफ योर डिनोमिनेटर इज 6600 समथिंग and your numerator is 67,000 something, are we sure कि ये रेशियो 10 से बड़ा होगा? Everybody? Yes, sir. Sir, Yes, equal sir. to 10 भी तो हो सकता है. नहीं, equal to 10 बेटा कैसे होगा? Equal to 10 होगा तो 66580 होना चाहिए ना ऊपर. अच्छा ठीक है सर. है ना? Now the second ratio, it is 10,000 something and it is 110,000 something. So can we say my ratio is either 11 or greater than 11? Yes, sir. Right. It is 12,000 something and it is almost 1,20,000 something. So is this ratio almost equal to 10? Yes, sir. Okay. Now here what you have is, let us say about 14,000. About 14,000. Okay. And I can say that it is less than 1,40,000. तो क्या है, पक्की बात है 10 से छोटा है, and काफी छोटा है for that matter. Yes, sir. So if I'm looking for the lowest ratio, tell me which ratio is the lowest ratio? Last one. Last one. Fourth option answer हो जाएगा. Yes, sir. Any doubts? All right, let's move on. Proper fraction वाला भी तो concept लगा सकते हैं. कौन सा वाला? Improper fraction. तो improper तो सारे ही हैं. बट सर अगर इम्प्रॉपर, अगर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैल्यू छोटा होते चला जाता है तो नहीं, ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है? ओके सर, मुझे नहीं लगा सर. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर प्लीज लास्ट वाला एक बार बता देंगे आपने कैसे दिया फ्रैक्शन?
Denominator is your around 14,000. Okay. And numerator mein you can see that the value is less than 1,40,000. In fact, way less than 1,40,000. Yes, sir. So the answer will be definitely less than 10. Okay, sir. Okay. Right, question number 2. Now in question number 2, what you need is the average production. Okay, average production from 96-97 to 2000-2001 is nearly. Okay, so now if you take a look at the options, you realize कि options दूर-दूर हैं. और अगर options दूर-दूर होते हैं तो क्या कर सकते हैं हम? How can we take the advantage of this situation? Approximation. Yes, approximations. So we know कि average का ये formula है. So let us try to use approximations here. Okay. Production. Okay. Now everybody, tell me, क्या मैं इसको 70,000 के अराउंड मान लूं, इसको 90,000 के अराउंड मान लूं, इसको if I take around 1,10,000. ओके, तो ध्यान देना यहां मैंने 3,000 के अराउंड कम किया था. फर्स्ट नंबर में मैंने 3,000 के अराउंड बढ़ा दिया था. क्या वो दोनों नंबर्स एक दूसरे को बैलेंस कर गए? Yes, sir. Let me take this to be around 1,20,000. इसको 1,20,000 मान लेते हैं. इसको 1,25,000 ले लेते हैं. 1,25,000. So this becomes, that means 70 plus 90 plus 110 plus 120 plus 125 divided by how many values, everyone? 5. 5 values. चलो जल्दी से एक बार न्यूमरेटर ऐड करो जल्दी से. 160, 270, 390. सही है ना? So this is 515,000 divided by 5. So will my answer be around 1,03,000? Second option. देखिए ऑप्शंस का ना बहुत रोल होता है कैलकुलेशंस में, especially if your options are far apart, if your options are differing by let's say a substantial value. Approximations का बहुत तगड़ा रोल है. So whenever you see a calculation based set, is this a set based on calculations purely? No, sir. Right. So whenever you see any set which is based on calculations, हमेशा options का utilization करना चाहिए आपको if they are far apart. Close है तो अलग बात है. Then maybe I think the best choice is to skip that question अगर options close हैं तो. But अगर options दूर-दूर हैं कभी भी exact answer करना, exact calculation आपने करनी नहीं है. You should always apply approximations. You should always make use of approximations. Are we clear with this question? Shall we move on? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Question 3. What is the average of the ratios of production to exports over the given period? No, sorry, over the period 96-97 to 99-2000. Average निकालना है ratios का. So in that case, do I need the sum of all ratios divided by the number of ratios? बताइए मैंने ठीक समझा है इस क्वेश्चन को? Yes, sir. Right. Now don't repeat the calculations. Why I am saying so is because we have already done something of this kind in one of the questions. कुछ याद है किस क्वेश्चन में हमने किया था? Question number 1 में किया. Question number 1. So let's take the help of question number 1. और मुझे बताइए in question number 1 क्या सारे ratios were either 10 or greater than 10? Yes, sir. Yes, sir. Right. So if all the ratios were 10 or greater than 10, so can you conclude that their average should also be greater than 10? Can we conclude that? Yes, sir. All of you? Yes. So should second option be my answer? Yes, sir. Any doubts? All right, let's move on. Question number 4.
a very easy question. You have to calculate the percentage increase in exports over the given period. अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. When you say over the given period, then which values do you consider for your answer, for your percentage? Final and initial. So first and last. First and last, yes, first and last. So this is your initial value. This is your final value. Okay. Now there are two ways of approaching this question. One is go by the normal formula, percentage change, and make the calculations. 13,900 minus 6658 upon 6658 into 100. So that means ऊपर ऐसे मानिए अगर ये 14,000 है और ये 6600 है, suppose 14,000 and 6600, so you get 7,400 upon 6,600 into 100. Okay, 0 0. 11 का टेबल यूज कीजिए for the timing. So 11 sevens are 77, 11 6 are 66. So my answer should be less than 116%. And tell me which option is less than 116% right now. 108. 108. 108 answer हो जाएगा. One way of doing this. Okay. An alternate way of approaching this question could be that you compare the values. That you started with 6658 and you ended with 13,900. So tell me, is the value becoming just more than double of itself? बताइए, is the value becoming just double? Yes, sir. और डबल होने का मतलब होता है कितने परसेंट का इंक्रीज? 100. 100, yes. So is my answer just more than 100% increase? Second option. Any doubts? तो ये आइडिया समझ आया सबको यहाँ पर that the question is not at all calculation intensive. Why? Because the options are far apart. क्योंकि options दूर दूर है, options में gap काफी है. So although the question seems like a calculation based, but actually आप इस पूरे question को approximations में change करके आराम से answers निकाल सकते हो. जो 4 questions अभी तक हमने किए, क्या सबको बात समझ आ गई है approximations के point of view से? Right. चैतन्य, yes. सर आंसर्स तो मेरे सारे ठीक हैं, लेकिन मेरी थोड़ी अप्रोच चेंज थी. I mean, टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम कम लग रहा है? ज्यादा लग रहा है. हाँ, वो कैलकुलेशन भी वैसे ही लग रहा होगा ना आपको? यस सर. हाँ जी, बिल्कुल सही बात है. तो आपने अप्रोक्सीमेशंस का आइडिया यूज ही नहीं किया होगा यहाँ पर. सर All किया right. है, 2-3 क्वेश्चंस किया. अच्छा किया है, चलो ठीक है. लेट्स मूव ऑन एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट क्या दिव्यांशी? सर एक डाउट था, फर्स्ट मेथड में लास्ट स्टेप आपने क्या लिखा है? 11 से कैंसिल किया हमने, तो ऊपर 11 7 जा 77 टाइप्स कैंसिल होगा, नीचे 11 6 जा 66 टाइप्स कैंसिल होगा. ओके सर. तो 7/6 is around 116%. ओके, थैंक यू सर. Okay. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर सेकंड क्वेश्चन जो एवरेज वाला था उसमें अभी सेकंड पे ही है? नहीं सर, एक्चुअली आपने बोला था कि सारे जो है वो 10 से ग्रेटर है या फिर 10 to equals to है. नहीं, वो थर्ड क्वेश्चन था. हाँ जी. तो सर एक आपने लास्ट वाला ऐसा था ना जो 10 से लेस भी था. बिल्कुल सही बात है, वो लास्ट ईयर था आपका 2000-2001 वाला. ओके सर, ओके. या आई गॉट. पर Yeah. वो तो कंसिडर ही नहीं करना है यहाँ पर. या श्योर सर, गॉट. ओके ओके. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन है, हाँ जी. अगर उसे कंसिडर करते तो हम 9.91 लेते या फिर जो हमने लिया है वो लेते? नहीं, फिर आपको देखना पड़ता है कि वो 10 से कितना कम है एंड देयरफॉर वो बाकी वैल्यूज को कितना इंपैक्ट करेगा. ठीक है. हाँ जी. सर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर? मे नॉट भी पूरा, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. यू कांट डू इट इन दैट केस इन दिस वे जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में कर रखे हैं. ओके सर. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 ऑल ऑफ यू. कंजम्पशन का हमने शुरुआत में डिस्कशन किया था व्हाइल डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन कि योर कंजम्पशन इज नथिंग बट प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स. ओके.
So when the question is saying कि increase निकालना है आपको consumption का, increase आपको निकालना है consumption का, तो does that imply कि आप production के increase में से exports का increase minus कर दो? क्या इसका यही मतलब है एक तरीके से? Right? अब increase कैसे निकालेंगे? When you say over the given period, अब increase कैसे निकालेंगे? How do you calculate increase? Okay, final minus initial, increase ऐसे ही निकालते हैं, final minus initial, right? So this is 1,25,000, this is 67,000. So 1,25,000 minus 67,000, ये तो आपका production हो गया. Exports के केस में you'll say around 14,000 minus around 6,600. So you get 58,000 minus around 7,400. So your answer should be around 51,000. So the closest option that you can get right now is the first option. बताइए कोई दिक्कत? Okay. And similar process you can use for question number 6 as well, because now again the question is about consumption, but this time you are calculating the average consumption. So you will say that your average consumption will be nothing but average production minus the average exports. Average production we have already calculated in one of the questions. I think question number 2 में था 1,03,000 types. In a similar fashion, you can calculate the exports also. वो 10,000 types आ जाएगा. So your answer will be in the range of 93,000. That means your third option.